गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक लैंडमार्क शिफ्ट हुआ है इंडिया की क्लैनलीनेस रैंकिंग्स में। अहमदाबाद जो है वो क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री बन के सामने आया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में। ये एक एनुअल सैनिटेशन सर्वे है जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स कंडक्ट करता है। और जो है इंदौर को अब एक स्वच्छ भारत सुपर लीग 1.0 इसमें जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया है, क्योंकि उसने एक्सीलेंस दिखाई है, सस्टेन्ड एक्सीलेंस अर्बन सैनिटेशन में। तो स्वच्छ सर्वेक्षण है क्या? 2016 में लॉन्च किया गया था स्वच्छ भारत मिशन के अंडर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन सर्वे है। इवैल्यूएट करता है सिटीज़ को ऑन मल्टीपल पैरामीटर्स। 2024-25 का जो एडिशन है सर्वे का, उसमें 4500 अर्बन लोकल बॉडीज़ को विद ओवर 12 करोड़ सिटीज़न रिस्पॉन्सेज जो है वो कंडक्ट किया गया। तो अब इसमें सिटीज़न फीडबैक लिया जाता है, वेस्ट सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग को देखा जाता है, सर्वे किया जाता है, ओडीएफ स्टेटस को देखा जाता है, फिर क्लैनलीनेस देखी जाती है पब्लिक एरियाज़ में, म्यूनिसिपल इनोवेशन और डिजिटल मॉनिटरिंग को भी इसमें जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। तो अगर हम देखें तो टॉप क्लीनेस्ट सिटीज़ जो हैं जिनकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है वो है अहमदाबाद, फिर है भोपाल और सूरत। इंदौर जो पिछले 6 साल से जो है वो टॉप कर रहा है चार्ट्स को, उसको अब एलिवेट करके स्वच्छ भारत सुपर लीग 1.0 कैटेगरी में डाल दिया गया है। और उन सिटीज़ को बेसिकली रिवॉर्ड किया जा रहा है जो एग्जाम्पलरी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर रहे हैं बहुत ही लंबे टाइम से। अब गंगा में के टाउन्स में देखें तो वाराणसी जो है वो क्लीनेस्ट गंगा टाउन एमर्ज हुआ है फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव ईयर। क्लीनेस्ट सिटीज़ जिनकी 1 लाख से कम पॉपुलेशन है तो वो सासवाद है, जो आपके महाराष्ट्र में आता है। फिर बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में महाराष्ट्र जो है वो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बनी है ओवरऑल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है वो सेकंड और थर्ड नंबर पर आए हैं। गुजरात की जो सिटीज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो इम्प्रेसिव मार्क किया है इस बार सर्वे में। अहमदाबाद, सूरत, राजकोट जो है वो टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटीज़ में आए हैं। कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है वेस्ट प्रोसेसिंग में, मैकेनाइज्ड रोड स्वीपिंग में, सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म्स में। ठीक है, तो इस बार जो स्वच्छ सर्वेक्षण था उसमें रियल टाइम डेटा का भी इस्तेमाल किया गया है। अब अगर हम क्लीनेस्ट कंटोनमेंट बोर्ड देखें तो माऊ जो है मध्य प्रदेश का, वो इस बार सबसे क्लीनेस्ट माना गया है। तो ये क्लीनलीनेस रैंकिंग जो है ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे जॉब क्रिएशन भी हो रही है वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर में, और एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट हो रही है सर्कुलर इकोनॉमी वेंचर्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेफ हार्बर डॉक्ट्रिन। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर ने डिफाइंड किया है कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने अपना यूज़ ऑफ सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट और सहयोग पोर्टल, जिसमें कि आप जो है गवर्नमेंट रेगुलेट और रिमूव करती है ऑनलाइन कंटेंट बाय इंटरमीडियरीज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो सेक्शन 79 तो है, आपको याद होगा कि सेफ हार्बर प्रोविजंस देता है ये इंटरमीडियरीज को, कि उनको थर्ड पार्टी कंटेंट की जो लाइबिलिटीज़ होती है उससे बचाता है। सेक्शन 69A जो है आईटी एक्ट का, वो पावर्स देता है कंटेंट को ब्लॉक करने की ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स। गवर्नमेंट अब जो एक्स है उनका आर्गूमेंट ये है कि गवर्नमेंट मिसयूज़ कर रही है सेक्शन 79 का ब्लॉकिंग ऑर्डर्स देने के लिए, और सहयोग पोर्टल को वो एक सेंसरशिप पोर्टल कह रहे हैं। सहयोग पोर्टल जो है उसको डेवलप किया गया है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा, यूनियन होम मिनिस्ट्री के, और इसमें अभी तक 38 इंटरमीडियरीज जो हैं वो अपना API एक्सेस दे चुके हैं। लेकिन एक्स ने इस पर ऑन बोर्ड होने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि लीगल ओवररीच है। गवर्नमेंट का कहना है कि जो एल्गोरिथमिक कंटेंट क्यूरेशन होता है वो ट्रेडिशनल एडिटोरियल कंट्रोल से डिफरेंट है, इसलिए उसको ज़्यादा रेगुलेशन की ज़रूरत है। एल्गोरिदम्स जो हैं वो सिर्फ हार्मफुल कंटेंट को ज़्यादा एम्पलीफाई करते हैं बिना अगर उसको हम ओवरसाइट रखें तो। अनोनिमिटी और सूडोनिमिटी जो है प्लेटफॉर्म्स पे वो इंक्रीज़ करती है इंसाइटमेंट के रिस्क को भी। तो इसलिए एक वाइडर नेट जो है सेक्शन 79 के अंदर वो ज़रूरी है। अब एल्गोरिदम्स जो है वो ऑटोमेटिकली बूस्ट कर देते हैं कुछ कंटेंट को वाइडर ऑडियंस को। कोई ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है एल्गोरिदमिक डिसीजन मेकिंग में। ट्रेडिशनल मीडिया में तो बिल्ट इन गेट कीपिंग फंक्शंस होते हैं, तो इसलिए कुछ क्वालिटी कंट्रोल रहता है, लेकिन एल्गोरिदमिक जो है आपके जो मीडिया है उसमें ये सब नहीं हो पाता है। सेक्शन 69 के बारे में गवर्नमेंट ने बोला है कि ये सिर्फ उस कंटेंट से डील करता है जो आउटसाइड आर्टिकल 19 आता है। तो सेक्शन 79 इनेबल करता है कि जो भी इस आर्टिकल 19 के बियॉन्ड के स्कोप के जो एक्शंस हैं उनको एड्रेस किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा है कि ज़रूरत है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को राइट ऑफ सोसाइटी एंड स्टेट के साथ भी देखा जाए।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्लोबल बायस ऑन रशियन ऑयल ट्रेड। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने फर्मली डिसमिस किए हैं कंसर्न्स ओवर पॉसिबल यूएस सैंक्शंस जो रशियन ऑयल ट्रेड पर लगने वाले हैं। इंडिया के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा है कि इंडिया के जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं उसको डाइवर्सिफाई किया जा रहा है। 27 से 40 कंट्रीज़ को हम डाइवर्सिफाई हो चुके हैं और इंडिया जो है वो क्या कोई भी तरह के चैलेंजेस फेस कर सकता है ऑलरेडी। इवन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने भी जो है डबल स्टैंडर्ड्स को हाईलाइट करते हुए कहा है कि इंडिया की प्रायोरिटी इस टाइम पर अफोर्डेबल एनर्जी है अपने लोगों के लिए। अब ये रिमार्क्स कब आए हैं, जब नेटो के चीफ जो है उन्होंने कहा कि रशियन ऑयल जो कंट्रीज़ बाय कर रही हैं उनको यूएस के सेकेंडरी सैंक्शंस जो है वो फेस करने पड़ेंगे। तो यूएस सिग्नल कर रहा है टफर मेजर्स अगेंस्ट कंट्रीज़ जो ट्रेड करती हैं रशिया के साथ। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कह रहे हैं कि सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए जाएंगे अगर मॉस्को जो है वो अपनी वॉर ख़त्म नहीं करता विद इन 50 डेज़। तो इसका मतलब क्या है कि पेनल्टीज़ उनको टारगेट करेंगी जो रशिया के की ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जैसे इंडिया, चाइना और ब्राज़ील। नेटो चीफ जो है उन्होंने भी कॉशन किया है इंडिया को, कहा है कि प्रेशराइज़ करें इंडिया रशिया को कि वो पीस टॉक्स में जाए। ठीक है। तो यूएस कांग्रेस जो है वो अभी कंसिडर कर रही है एक बिल जिसमें कि 500% टैरिफ्स इम्पोज किए जाएंगे रशियन एनर्जी पर। ये मूव रिफ्लेक्ट कर रही है ग्रोइंग वेस्टर्न फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग सैंक्शंस हैं उससे रशिया की इकोनॉमी को वो जो है वो क्रिपल नहीं हुई है बिकॉज रशिया ने अपनी जो है ट्रेड को डाइवर्सिफाई कर लिया है। तो इंडिया का जो ट्रेड है रशिया के साथ वो बहुत शार्पली ग्रो हुआ है। $68.7 बिलियन का ट्रेड किया है हमने, जो कि 6 टाइम्स है प्री पैंडमिक फिगर पर। इंडिया के जो की इंपोर्ट्स हैं वो क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, कोल हैं। और इंडिया मेंटेन करता है कि हम अपने ऑयल सोर्सेज को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं और सप्लायर्स को शिफ्ट भी कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। इंडिया और यूएस जो है वो नेगोशिएट कर रहे हैं एक ट्रेड डील, लेकिन अगर सैंक्शंस लगते हैं तो वो डिसरप्ट हो जाएगी। ठीक है। फाइनली रशियन ऑयल बॉयर्स को टारगेट करने से ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स जो हैं वो अनसेटल होंगी। तो यूएस के लिए भी वो और उसके अलाइज के लिए भी वो सही नहीं रहेगा। ट्रंप ने जो 50 डे की डेडलाइन दी है रशिया को यूक्रेन वॉर एंड करने के लिए, वो एक मिक्स्ड रिस्पांस ड्रॉ कर रही है वेस्ट में। बहुत से जो हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये भी कह रहे हैं कि अगर ये डेडलाइन जो है वो बैकफायर भी कर सकती है, जिससे रशिया को टाइम मिल जाएगा कि वो और ज़्यादा यूक्रेनियन टेरिटरी को जो है वो सीज़ करे और अपनी बार्गेनिंग पावर को स्ट्रेंथन कर ले। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म। टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डीजीएफटी जो है उन्होंने 2 मेजर B2B ट्रेड एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है ताकि अवेयरनेस और अडॉप्शन जो है ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म की एनहेंस हो सके। तो ये ट्रेड कनेक्ट ई प्लेटफॉर्म है क्या? एक न्यू डिजिटल इनिशिएटिव है ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंटरनेशनल ट्रेड को फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स, खासकर एमएसएमईज़ के लिए। तो एक इनिशिएटिव है डीजीएफटी का, एक कॉम्प्रिहेंसिव हब ऑफ इंफॉर्मेशन और सर्विसेज है इंटरनेशनल ट्रेड की फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। इंडियन एक्सपोर्टर्स, एमएसएमईज़, एंटरप्रेन्योर्स को जो है बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इंडियन मिशंस के साथ ये कनेक्ट करता है। तो ये लेटेस्ट और अपडेटेड इन्फॉर्मेशन देता है उन्हें टैरिफ्स, सर्टिफिकेशंस, ट्रेड इवेंट्स के बारे में। ठीक है। एक सिंगल पॉइंट ऑफ इशुएंस और वैलिडेशन है ये सर्टिफिकेट्स ऑफ ओरिजिन का भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिसेंटली डायग्नोज हुए हैं क्रॉनिक वेनस इनसफिशिएंसी से। तो ये तब होता है सीवीआई जब आपके लेग की वेन्स जो हैं वो स्ट्रगल करती हैं कि वो ब्लड को बैक टू द हार्ट जो है वो फ्लो करने दें। तो अंडर नॉर्मल कंडीशंस क्या होता है, जो वाल्व्स होते हैं आपके वेन्स में वो फैसिलिटेट करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। लेकिन जब वो ऑप्टिमम लेवल पर नहीं काम करते हैं तो ब्लड जो है वो बैकवर्ड आ जाता है और अक्यूमुलेट होने लगता है लेग्स में। तो ये कंडीशन जो है एक सीरियस हेल्थ थ्रेट तो नहीं है, पर इससे पेन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है, क्रैम्प्स हो सकते हैं, स्किन चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है। तो पीपल जो है बहुत ही प्रोन रहते हैं इसको अगर वो ओवरवेट है या फिर कोई फैमिली हिस्ट्री है इस प्रॉब्लम की। तो जो लोग हैं वो इसमें कई बार क्या होता है कि उनको कोई इंजरी होती है जब लेग में, या सर्जरी हुई होती है, प्रीवियस ब्लड क्लॉट्स होते हैं, तो भी वो इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो ये बहुत कॉमन है अमंग ओल्डर एडल्ट्स। और इसको लाइफस्टाइल चेंजेस से सर्जरी या फिर सर्जरी करवा कर इसको ठीक किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज, लेग एलिवेशन, वेट मैनेजमेंट के थ्रू भी इसको ठीक किया जा सकता है। मेडिसिन भी जो हैं कई बार दी जाती हैं ब्लड फ्लो को बूस्ट करने के लिए, जैसे कि कंप्रेशन थेरेपी भी दी जाती है। ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी। टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक टीम है आईआईटी कानपुर की, उन्होंने डिस्कवर किए हैं कुछ एंशिएंट बुद्धिस्ट स्तूपा और स्ट्रक्चरल रिमेन्स जो कि बरिड थे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में।
ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी का यूज़ करते पता लगा है, ठीक है। तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार टेक्नोलॉजी का एक जियोफिजिकल मेथड जो यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस इमेज करने के लिए सब सरफेस ऑफ द अर्थ को। तो ये नॉन डिस्ट्रक्टिव डिटेक्शन और इमेजिंग मेथड होता है जो आइडेंटिफाई करता है सब सरफेस एलिमेंट्स को। तो जीपीआर जो है वो ट्रांसमीटर एंटीना का यूज़ करता है हाई फ्रीक्वेंसी पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेजने के लिए। ये वेव्स स्प्रेड आउट होती हैं, ट्रैवल करती हैं डाउनवर्ड्स और एक बरिड ऑब्जेक्ट को जाकर हिट करती हैं। पार्ट ऑफ द वेव जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, स्कैटर बैक होती है सरफेस पे, और बाकी की जो है वो नीचे कंटिन्यू करती रहती है डाउनवर्ड ट्रैवल करना। जो रिफ्लेक्ट हुई होती है वो एक रिसीवर एंटीना में जाकर रिसीव होती हैं और फिर वो रिकॉर्ड किया जाता है एम्पलीट्यूड उसका और अराइवल टाइम एक डिजिटल स्टोरेज डिवाइस पर। तो ये बेसिकली मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने में हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं आकाश प्राइम मिसाइल। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। 2 एरियल हाई स्पीड अनमैन्ड टारगेट्स हाई ऑल्टीट्यूड पर लद्दाख में जो है वो डिस्ट्रॉय करके आकाश प्राइम थ्रू। तो ये अपग्रेडेड वेरिएंट है आकाश वेपन का हाई ऑल्टीट्यूड रीजन के लिए। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्लेटफॉर्म है। इंडिजिनस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर इसमें अपग्रेड किया गया है। केपेबल है टारगेट करने के लिए ऑब्जेक्ट्स एट रेंज ऑफ अबाउट 25 to 30 किलोमीटर्स। आकाश प्राइम जो है वो इंजीनियर किया गया है डिप्लॉयमेंट अबव 4500 मीटर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं माउंट किलिमंजारो। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस और इन्वायरमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डिफेंस सेक्रेटरी ने फॉर्मली फ्लैग ऑफ किया है माउंटेनरिंग एक्सपीडिशंस माउंट एवरेस्ट और माउंट किलिमंजारो पर। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका का टॉलेस्ट माउंटेन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है, मतलब किसी माउंटेन रेंज का पार्ट नहीं है, ये अकेला ही माउंटेन है। लोकेटेड है ये नॉर्थ ईस्टर्न तंजानिया में नियर केन्या बॉर्डर। स्ट्रेटो वॉल्केनो है ये और अपनी स्नो कैप्ड पीक के लिए जाना जाता है। किलिमंजारो नेशनल पार्क जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है 1987 से। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Swachh Sarvekshan 2024-25. This topic is important for your governance section. In a landmark shift in India's cleanliness rankings, Ahmedabad has been declared as the cleanest city in the country under the Swachh Sarvekshan 2024-25, the annual sanitation survey which has been conducted by Ministry of Housing and Urban Affairs. So this is the first time Ahmedabad has secured the top spot, and it has the consistent chart topper Indore has transitioned into a newly created Swachh Bharat Super League 1.0. So this Swachh Sarvekshan was launched in 2016 under Swachh Bharat Mission Urban, and it is the world's largest urban sanitation survey, which evaluates cities on multiple parameters including citizen feedback, waste segregation and processing, open defecation free status, cleanliness in public areas, municipal innovation and digital monitoring. The 2024-25 edition of the survey has covered 4,500 urban local bodies with over 12 crore citizen responses. So the top cleanest cities which have population more than 1 lakh include Ahmedabad, Bhopal, Surat. Indore, which has topped the charts for 6 consecutive years, has now been elevated to the Swachh Bharat Super League 1.0 category, and it has been introduced to reward cities which have maintained exemplary standards for an extended period. Varanasi has retained its position as the cleanest Ganga town for the 4th consecutive year. Okay, Saswad in Maharashtra is the cleanest among cities with under 1 lakh population. Maharashtra has been ranked as the best performing state overall. Madhya Pradesh and Chhattisgarh are followed as second and third respectively. Gujarat's cities have made an impressive mark in the survey. Ahmedabad, Surat and Rajkot have been in the top 10 cleanest cities. This is consistent with the fact that they have made investment in waste processing, mechanized road sweeping, and citizen engagement platforms. So this time, Swachh Sarvekshan survey has used real-time data. In the terms of cantonment board, the cleanest one has been Mau, that is in Madhya Pradesh. So Swachh Sarvekshan is a cleanliness ranking tool. It is also a key driver for competitive federalism, inspiring states and cities to enhance urban governance. It has also catalyzed job creation in the waste management sector and promoted entrepreneurship and circular economy ventures. So the next topic is Safe Harbor Doctrine. This topic is important for your governance section. Center has defended before the Karnataka High Court its expanded use of Section 79 of IT Act,
which provides for safe harbor doctrine, and the Sahyog portal to regulate and remove online content by intermediaries like social media platforms. So, Section 79 provides safe harbor to those intermediaries like social media platforms so as to protect them from liability for third party content. But this is withdrawn if intermediaries do not comply with takedown orders. Section 69A grants powers to block content only on specific grounds. So X is arguing that government is misusing this Section 79, and they have termed Sahyog portal as censorship portal. So what is Sahyog portal? It is developed under I4C, that is Indian Cyber Crime Coordination Center of Union Home Ministry. As of March 2025, 38 intermediaries have enabled API access to this platform, but X has refused onboarding. It has cited legal overreach. But government is saying that algorithmic content curation is distinct from traditional editorial control. Therefore, it needs new regulation. Algorithms amplify harmful content rapidly without oversight. Anonymity and pseudonymity on platforms increase incitement risks and shield accountability. Therefore, a wider net under Section 79 is essential to tackle a broad class of unlawful content beyond what is specified in Section 69A. So, what is algorithmic curation versus traditional media? Algorithms automatically boost certain content to a wider audience. There is no transparency or accountability in algorithmic decision making, and traditional media has inbuilt gatekeeping functions which ensures a certain quality control, but it is missing in algorithmic curation. So Section 69A deals with only content which falls under Article 19. Government therefore argues that Section 79 enables actions which are beyond this scope so as to address all kinds of unlawful content under any law. So therefore, government is saying that we need to place emphasis on balancing freedom of expression with the right of society and state. So the next topic is global bias on Russian oil trade. This topic is important for your international relations and economy section. India has firmly dismissed concerns over possible US sanctions on its Russian oil trade, and Indian Petroleum Minister has said that India has diversified oil imports from 27 to 40 countries and said that India would handle any challenges. On the same day, MEA has warned against double standards, stressing that India's priority is securing affordable energy for its people. US is basically signaling tougher measures against countries which are trading with Russia, and they have warned that secondary sanctions would be imposed if will not end this war within the next 50 days, which would mean that penalties targeting Russia's key trading partners would be done, like India, China, and Brazil. NATO chief has also cautioned India and it has urged Delhi to pressurize Russia into peace talks. In addition, the U.S. Congress is considering a bill that would impose up to 500% tariffs on buyers of Russian energy. These moves reflect growing Western frustration as existing sanctions have not crippled Russian economy because Russia is trading with countries including India. India's trade with Russia has grown sharply. It has reached a record $68.7 billion in the last financial year, which is about 6 times the pre-pandemic figure. India's key imports from Russia include crude oil, petroleum products, fertilizers, and coal. While there are concerns over potential US sanctions, India has maintained that it has diversified its oil sources and it can shift supplies if required. India and US are negotiating a trade deal also, but if the sanctions are placed, then it would disrupt it. Finally, Russian oil buyers targeting Russian oil buyers could unsettle global energy markets also, which would cause blowback for the US and its allies as well. So Trump has proposed this 50-day deadline for Russia to end the Ukraine war, and threats of secondary sanctions have drawn a mixed response in the West. Many of the Western partners worry that this deadline could backfire, which would give Russia time to seize more Ukrainian territory and strengthen its bargaining power. So the next topic is Trade Connect e-platform. This topic is important for your economy section. So DGFT has participated in the two major B2B trade exhibitions this month to enhance awareness and adoption of the Trade Connect e-platform, which is a new digital initiative aimed to transform the landscape of international trade for Indian exporters, especially MSMEs. So this platform serves as a comprehensive hub of information and services on international trade for all stakeholders. It will connect Indian exporters, MSMEs, and entrepreneurs with various stakeholders, including Indian Mission Abroad,
export promotion councils, and other partner government agencies. It provides latest and updated information on tariffs, certifications, trade events, e-commerce, and buyers in a simplified manner to MSMEs. It also serves as a single point of issuance and validation for preferential and non-preferential certificates of origin. So the next topic is chronic venous insufficiency. This topic is important for your social issues. So US President Donald Trump has been recently diagnosed with CVI, which occurs when your leg veins struggle to allow the flow of blood back to the heart. Under normal conditions, the valves in the veins facilitate the flow of blood towards the heart, but when they don't work on the optimum level, the blood may flow backwards and accumulate in your legs. This condition is not a serious health threat, but it can cause pain, swelling, cramps, skin changes, varicose veins, or even leg ulcers. So, people who are overweight or who have a family history are more likely to have this condition. People may also experience it if they have ever sustained an injury to their leg, they have had surgery, or had previous blood clots. This is common among older adults, and the risk heightens with age. So, treatment include lifestyle changes or even surgery, regular exercise, leg elevation, and weight management measures. Sometimes medicines which boost blood flow are also given. So the next topic is ground penetrating radar technology. This topic is important for your science and tech section. A team of IIT Kanpur has discovered signs of ancient Buddhist stupas and structural remains buried beneath the soil in Yamunanagar district of Haryana by using ground penetrating radar technology. So this ground penetrating radar technology is a geophysical method which uses high frequency electromagnetic pulses to image the subsurface of the earth or other solid materials. So it is a non destructive detection and imaging method which identifies subsurface elements either underground or within a surface such as concrete. So this technology uses a transmitter antenna to send high frequency pulsed electromagnetic waves into the subsurface to acquire information. The wave spreads out and it travels downwards until it hits a buried object. So part of the wave energy is reflected or scattered back to the surface, while part of the energy continues to travel downwards. The reflected one is received by an antenna, and the it records the amplitude of the reflected energy and the arrival time of the wave on a digital storage device. So GPR can detect both metallic and non-metallic objects. Okay. So the next topic is Akash Prime missile. This topic is important for your security section. Recently, India has achieved a significant milestone by successfully destroying two aerial high-speed unmanned targets at high altitude in Ladakh by Akash Prime, which is an upgraded variant of Akash weapon for the high altitude region. It is a medium-range surface-to-air missile platform. Its key upgrade is an indigenous radio frequency seeker. It is capable of targeting objects at a range of about 25 to 30 kilometers. It is engineered for deployment above 4,500 meters. So the next topic is Mount Kilimanjaro. This topic is important for your uh, international relations and environment section. So recently, Defense Secretary has formally flagged off mountaineering expeditions to Mount Everest and Mount Kilimanjaro. So Mount Kilimanjaro is Africa's tallest mountain and the world's largest freestanding mountain. It is located in northeastern Tanzania near the Kenya border. It is also called a stratovolcano. It is known for its snow-capped peak. And Kilimanjaro National Park is also a World Heritage Site since 1987. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.